uh, all right. Okay, then fair enough. So the review of the review of the time, and then you touch the words. It's unpaid, but just like in acute appendicitis. Thrombocytopenia है another liver manifestation है, लेकिन ये blood में भी चला जाता है. Pulmonary edema. How would you expect a patient is having pulmonary edema? By the way, yeah. Exactly. Like that patient, anybody remember that patient? He has to be पिछला वाला था. Third post-op day. First day she'll probably say that it's all right. Early next morning, जब से पानी शानी पिलाओ, she'll vomit a couple of times. Then suddenly she'll start saying that I can't pass mint. Usually what they do is they give her a policy or two, and then whatever is left in the colon, she passes that. Everybody thinks she is passed to people. But classically, third, fourth post-op day पे अक्सर होता है कि सुबह आप आके देखते हो. So the pulse is 130. The patient is like, picnic, and she's quite uncomfortable, and she says, "But I'm just having this feeling that it should pass, or I can't pass." That is classic होता है कि आप ठीक है, because अंदर वो ये रहा है कि fecal matter जो है वो उसे टका के irritate कर रहा है और वो sepsis में जा रही है. इसलिए post operatively, pre operatively, antenatally, before the preconception, after, whenever you see a patient, just make sure that एक तो आपने उससे हाल वाल पूछा. And when the initial 2 minutes होते हैं ना, जैसे डॉक्टर राशिद used to say कि whenever जब मैं कोई लेक्चर शुरू करने लगता हूँ, तो दो पहले जो initial minute होते हैं ना, usually what he used to do when he was addressing a gathering or a conference होती, he used to talk about his own बात. Okay, some people, what I started doing was I started saying easy to follow करते. Dr. Rashid used to have a joke book with him, and he used to pick out a couple of jokes और वो माँ उठा के मौके की बात करते हैं कि टका दिया शुरू में. उससे ये होता है कि आप जो initial 30 seconds होते हैं, 40 seconds होते हैं, 60 seconds होते हैं, when you're standing in front of a crowd, तो आप थोड़े से उसी वक्त आप सबसे ज़्यादा nervous होते हैं. And you are thinking about what you're going to do or what people are going to say and what their opinion about you is going to be. Maybe I'm okay, maybe हर बंदे में insecurity होती है. So उनको first 60 seconds so you try to minimize them. इसी तरह when the patient is like you're sitting down there and she walks in the door, आप उसे greet करते हो, how are you, here go, just get an idea of how she is, and then you obviously ask her our signs and symptoms, and then you go from there, and then you take then you do the examination, and then you और उसी examination का हिस्सा है general physical. General physical में blood pressure, pulse will tell you so much about the patient, particularly post-operative. Pulse stays हो वैसे ही एक बंदा आम शाम कर रहा है तो what do you think could be the problem with it? If there is any problem that is, हाँ, और
और बीमारी के लिहाज से या कोई सीने चढ़ते हैं एक और thing देखिए। Now we talk, ठीक है। anemia और एक और छोटी सी चीज होती है जो कि पास में लेते हैं हम देखते हैं, लेकिन बात बहुत ज्यादा सारा, ठीक है। आधी से ज्यादा फंक्शन उनकी हाइपोथायराइड है और आधी से ज्यादा फंक्शन जो है वो थायराइड से दो आता है, थायराइड दो आता है थायराइड, जीवन को बहुत पसंद है, इसमें बहुत कुछ होते था उनका, तो मेरा काम है कि कट कर, ठीक है। लेकिन लॉट ऑफ पीपल हैव दैट थिंग। अच्छा जी, सर स्टूडेंट्स को आवाज नहीं आ रही, बहुत कम आ रही, मैसेज आया है। कहाँ से बोलूं? वैसे आप बोले सर, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा ऊंचा बोलना पड़ेगा सर। उन तू बैठ जा, उड़ना मन काम के, ठीक, कॉन्स्टेंटली पूछूंगा। अच्छा ये हमने किया था कि नहीं किया था? लास्ट टाइम हमने खत्म क्या किया था? मुझे ये भी किया था। अच्छा डेफिनेटली तो ऑब्वियसली किया था। ये चार चीजें हम दोबारा पूछेंगे कि जब अगर हमने हिस्ट्री लेनी है तो हमने पूछना क्या है, ठीक है। आगे ये भी किया था, ये मैं उस वक्त कह रहा था तो मैं कि देख रही हो क्यों प्रिडिक्शन होती है उसकी, कि हमें इतना तो पता है कि जी कि एब्नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटल वास्कुलेचर होता है जी अर्ली इन प्रेगनेंसी, ठीक है। और ये क्यों होता है, इससे क्या होता है? अंडर परफ्यूजन होता है, बच्चा छोटा है, हाइपोक्सिया होता है, वो चला जाता है अपना उसमें क्या होता है, डिस्ट्रेस में भी जा सकता है, इस्कीमिया सेम थिंग, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वही है। और बच्चा वो वाला क्या थी, डज एनीबॉडी रिमेंबर दैट, वो व्हाई डज एन आईयूजीआर बेबी देन गो इनटू डिस्ट्रेस अर्ली? व्हाई डज एन आईयूजीआर बेबी, what is an IUGR baby? IUGR baby is the one जिसके head circumference will be according to the dates, while the abdominal circumference will be less than that, ठीक है। जी सर, उसके बाद रिजर्व नहीं है स्टेप को कंप्लीट करने के लिए। हाँ वही ना, ठीक है। तो हाँ, तो वो ग्लाइकोजन क्यों होती है, ग्लाइकोजन क्या करता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है ड्यूरिंग स्ट्रेस। ग्लूकोज हैपेंस टू बी द फ्यूल ऑफ द बॉडी, ठीक है। आपके ब्रेन में भी यही है और आपके यहाँ पे अपना जब बेबी होता है उसके अंदर भी यही है। और इंसुलिन क्या करती है? इंसुलिन क्या था? घोड़ा मूव्स द ग्लूकोज इनसाइड द सेल्स। ग्लूकोज को सेल के अंदर लेके जाती है, ठीक है। ये बात याद रखने वाली। इसकी वजह से क्या निकलते हैं जब वो उससे होता है, ये एंटी एंजियोजेनिक फैक्टर्स। बेसिकली एंटी एंजियोजेनिक जस्ट बाय द नेम आई कैन स्पीक, ज्यादा रिसर्च मैंने नहीं की इस पर, लेकिन एंजियो मींस वेसल्स, एंटी एंजियोजेनिक। इसकी वजह से क्या होगा? कैपिलरीज लीकेज होगा, वो सारा होगा, एडीमा होगा, हर किस्म की उसको प्रॉब्लम होगी। पीछे से एक लफ्ज याद रखो अगर आपने इसकी पैथोलॉजी याद रखनी है। एक तो तुम्हें ये याद रहना चाहिए कि प्लेसेंटल वास्कुलेचर ठीक नहीं बन रहा। दूसरी चीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वेजोस्पैज्म। वेजोस्पैज्म होगा तो बाकी सारा कुछ होगा, ठीक है। ये वही ये स्क्रीनिंग है, रिस्क रिडक्शन है। ये स्क्रीनिंग में आजकल वो उसने ये किया है, जस्ट पीपल हु आर गिविंग, मुझे लगता है कि शायद कोई एमआरसीओजी लेवल पे कोई बंदा ये I was making MCQs for the FCPS bank, so I didn't do this because I think it's unfair, because nobody's ever come across this thing. तो ये वही वाला हो गया ना पापा, याद है ये डाउन सिंड्रोम वाला है, ये जो डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग अगर किसी ने पढ़ी हो तो कभी। जी सर, प्लेसेंटल एसोसिएटेड। जी बिल्कुल ठीक। तो लेकिन PIGF को आई थिंक यू शुड रिमेंबर इट नाउ, ठीक है। ये जो प्लेसेंटल ग्रोथ फैक्टर है, इसको आपने जरूर याद रखना है कि इसकी जो प्रेडिक्शन है आजकल, एक तो प्लेसेंटल ग्रोथ फैक्टर का रेशियो था किसके साथ, याद है लास्ट टाइम? आखिरी 5 मिनट, हाँ टायरोसिन काइनेज टाइप चीज थी कोई, हाँ ठीक है। ये इसके साथ और प्लेसेंटल ग्रोथ फैक्टर के साथ और इसके रेशियो, ठीक है। ये एक क्वेश्चन बन सकता है। I don't know whether we should include it in FCPS or not, because I don't believe in exposing you to things which you haven't done, ठीक है। तो theoretically तो बड़ा बनता सवाल ये एज एन MCQ, लेकिन I don't think, I think गलत हो।
but I'm not making decisions there, so you know. अच्छा जी, spectrum of the disease में क्या है? You'd expect hypertension हर एक में होता है. Earliest and most common clinical finding है मेरा ख्याल है roughly 85% of the patients who develop preeclampsia present with hypertension. ठीक है जी? और increased peripheral resistance होता है, इसकी वजह से होता है. Cardiac output usually जो preeclamptic patients होते हैं उसमें it stays the same. In very few or particularly in cardiomyopathy, if the cardiac output is going, so just remember कि जी के ये cardiomyopathy now. Have you come across cardiomyopathy? I'm sure. I mean, but okay. All right, good, well done. Okay. All right. This is the same thing we just spoke about. I'm talking about the potential important clinical findings here, which you definitely need to remember, which you definitely need to rule out in history or in examination. या फिर labs कराओ, ठीक है? We rely completely on labs, which is ठीक है? एग्जामिन करना शुरू करो ना पेशेंट्स को, ठीक? और ये तो examinations are I just feel that there's something lacking here as far as examinations are concerned. Once you start examining the patient, you'll feel a lot more confident. I mean, there are a few times when my membership exam, the Viva, there's a long case there in Ireland. Okay. So I got this जो examiner थी ना, वो मशहूर है, वो मैं looked at my घर पर, ठीक है, और साथ उसके था एक बंदा वो जो बड़ा ठीक ठाक आदमी है, वो he was the second examiner. The case was a 34-weeker who has been admitted with the premature leakage of membrane, leaking के साथ आई हुई है, and we are keeping her over. ठीक है, तो I was asking her कि मैं 4 दिन से आई हुई हूँ और मुझे एंटीबायोटिक दे रहे हैं, तो you know, and I'll probably be sent home. I'm going downstairs to get a scan. And Dublin hospital का बहुत busy होता है, 20-25 deliveries per year होती है, तो ठीक है, मैंने उसका एग्जामिन किया, when I did this famous ये नीचे वाला, ठीक है, तो she wins and I immediately stopped. I said देख रहे हैं मुझे वैसे ही ना फेल करते, मैं कहता patient is tender है, but I think it's valid. And then I saw it. तो अभी था, मैंने बोला, वो मुझे बार-बार कहे कि you missed out something. मैं कहूँ कि क्या है इसमें, ठीक है, मैं उसका एंड तक चला जाऊँ, मैंने कहा बच्चा पैदा करा देते हैं, फिर कॉन्ट्रासेप्शन भी एडवाइस कर देते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग भी दे देते हैं, घर भेज देते हैं, वापस फॉलो अप के लिए भी बुला लेते हैं. मैं कहा मैं तो अपना काम पूरा करूँ ना. I was taught like this in FCPS in Pakistan. डॉक्टर आसिफ यूसुफ से कि बच्चा पैदा करा दे. So then eventually what turned out was the fact that nobody had examined her ever since the time she had come in to the hospital. And they said कि अच्छा ठीक है, fetal heart ठीक है, she's okay, she's not in labor, everything's all right, antibiotics शुरू कराओ, रख दो इसे, ठीक है. And every day, because other people were more important or considered more important, she was being अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, CRP ठीक है, ये वो, so she turned out to be Greek, and this is what she was trying to ask. लेकिन क्योंकि मैंने उसे कवर किया हुआ था और मैं बार-बार ये कह रहा था, और मैंने फिर उससे ये कहा था कि जब मैंने उसे एग्जामिन करने की कोशिश की, पेशेंट वाज टेंडर, सो आई कंफर्म इट बाय अल्ट्रासाउंड में करा लूंगा प्रेजेंटेशन के लिए, और ये दैट इज हाउ आई थिंक मेरे साथ हुआ, इसलिए कोशिश करना कि एग्जामिन करो. अच्छा, न्यूरोलॉजिकल में क्या है? न्यूरोलॉजिकल में द बिगेस्ट थिंग अबाउट दिस थिंग इज के स्टार्ट्स विद अ हेडेक. All these things which I'm mentioning, these particularly the neurological, जब बात शुरू हो जाए, दूसरा वाला भी है, these are features of severe disease. These aren't छोटी मोटी बातें. ठीक है, blood pressure तो होता ही होता है, और 15% में वो भी नहीं होता. 15% of health presents with blood pressure being just 135. It doesn't exactly meet the criteria of hypertension. So just to be wary of that. We were taught that it's usually frontal, but it could be anywhere. Okay? But the important thing to note is that it's always of a new onset, it's persistent and continues
डिस्पाइट टेकिंग पैरासीटामोल वगैरह या एसिटामिनोफेन जो वो लोग लेते हैं। पहले ऊपर चलना। अच्छा ठीक। विजुअल अगेन वही फोटोमाटा, व्हाट इज दैट वर्ड जो भी होता है, डिप्लोपिया, व्हाट इज दिस लास्ट वर्ड? अमोरस टू गैस। 4 घंटे भी मेरा क्यों? उन्होंने क्या आवाज काट कर दी? अच्छा हाँ, व्हाट इज दिस? नो, गूगल ही कर लो। मैं एक आंख से नहीं, आप देख सकते इस बार, ठीक है? ये लफ्ज याद रखना, ये तुम्हें किसी एमसीक्यू में ये हाँ, ये लफ्ज जो है ये एमसीक्यू में, ये प्लैब में तो मैंने देखा है आजादाना तौर पे इस्तेमाल होता है, ठीक है? तो ये आपको वन ऑफ दीज देंगे ये नीचे एज एन ऑप्शन, ठीक है? सो यू शुड नो दीज वर्ड्स, they like using such terminology, ठीक है? ब्लाइंडनेस रेयर होती है लेकिन ट्रांसिएंट होती है। अब वो पैथोलॉजी ये है कि रेटिनल आर्टोरियम सेरेब्रल एडीमा बार बार आएगा। मेंटल चेंजेस तो खैर वैसे ही आधे हैं यहाँ पे, तो दैट्स ओके। कंफ्यूजन एंड ऑल्टर्ड बिहेवियर, यू डोंट नो इट टेक्स इन अ सेकंड, इट्स नॉट प्रीक्लैम्सिया, बिलीव मी, इट्स समथिंग एल्स, ओके? सो या, so this is important as far as everybody else is concerned. I'm not really sure why we're not pushed about strokes. The stroke is like extremely common, extremely khatarnak, और बाहर के examiners love this thing, ठीक है? लीडिंग कॉज है डेथ का, डिसेबिलिटी का, बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। ज्यादातर हेमरेजिक होता है, हेमरेजिक होगा तो उसके बाद हाइपरटेंशन, हेडेक्स होगी। और ये आखिरी लाइन, when you are decreasing the blood pressure of a person, you are decreasing the chances of her having a stroke. This does not just apply for pregnancy. Outside of pregnancy, अपने घर में अपने अब्बू, अपने दादा, अपनी दादी, अपनी अम्मी, किसी का ब्लड प्रेशर जरूरत से ज्यादा हाई हो तो make her sit down and do something about it, because it might lead to catastrophic problems later on. And what you do is within the first, आपका एम ये होना चाहिए कि within the first hour 25% ब्लड प्रेशर मैं इस पेशेंट का कम करूं, उससे ज्यादा ना करूं। अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए, particularly in a pregnant patient, then what happens? प्लेसेंटल परफ्यूजन डिस्टर्ब हो जाता G, please. Placental perfusion might be affected. You might be affecting the baby. Okay? So because there are two people involved in a pregnancy. This is not just you're just आप OPD में बैठे हैं या आप emergency में बैठे हैं, somebody comes with 200 piece पर 200 250 whatever, and then you just talk करके आप उसका blood pressure गिराते हो, इस पे ध्यान। And then the thing is, your aim should be के first hour में 25% थोड़ा सा, and then over the next few hours, the aim should be कि I should make sure that the systolic goes below 160, and you do it slowly and surely. Why do you, which medicine जो कि आप लोग use करते हैं? Hydralazine. अच्छा तू सारा बोल रही है। हाइड्रोलाजीन जो है वो उसको कैसे देते हो तुम लोग बताओ? हाँ, और फिर उसके बाद कैसे कैसे देते हो? हाँ, हाइड्रोलाजीन जरा जल्दी एक्ट करती है, इसलिए उसको जरा ध्यान से देना है तो ठीक दो, लेकिन जरा ध्यान से दो। That's the only thing, because it just lowers it down substantially. ये generalized hyperreflexia. सर एक्सक्यूज मी सर, अब तो लेबिटालोल फर्स्ट लाइन नहीं है? जी, लेबिटालोल ही है first line. That's it stays the same, but a lot of people who are using hydralazine also, particularly बाहर भी, और यहाँ हमारे पास लेबिटालोल आ रही है ना, हाइड्रोलाजीन भी आ रही है। हाँ नहीं, लेबिटालोल तो आइडियल है, first choice is लेबिटालोल, but the only thing with that lowering blood pressure very quickly, that's
problem you should always have when somebody is thinking of using hydralazine or something. The medic आके बात करता है ऐसी तो just tell him कि यार इससे ये हो सकता है. So just for you to know. Obviously it's first choice. General hyperreflexia ankle clonus होता है ठीक. Nothing much I mean that. Now this is our friend. Okay. When she starts going all funny. Okay. So the diagnosis then obviously up stages to ये याद रखना कि severe features के साथ आएगी तो जो इसके death के chance 1 in 400 while no 1 in 50 है without severe features तो 8 गुना कम है ठीक है. So yeah but I think you should. And what's the अगर मेरे पास यहाँ पे कोई हम बैठे हैं तो नीचे पता चले कैंसर हो जाए तुम्हारे टाइम में क्या आएगा किसकी ट्रीटमेंट क्या है डॉक्टर साहब. सेरिब्रल इस्कीमिया जी बिल्कुल होता है जी. उसकी ट्रीटमेंट क्या है एक लफ्ज मैग्नीशियम सल्फेट. ठीक है जी मैग्नीशियम सल्फेट भी है लेकिन उसकी अल्टीमेट ट्रीटमेंट इज डिलीवरी प्री इक्लेम्पशिया से. उसमें आपको अब कोई शक नहीं रह जाना चाहिए. ठीक है ये पल्मोनरी एडिमा था वी टॉक अबाउट. ये जो सारी बातें तुमने ऊपर की है ना शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ये होता है कॉफ व्हीजिंग एंजाइटी रेस्टलेसनेस चेस्ट पेन भी होती है उससे palpitations भी होते हैं उससे. लेकिन ये नीचे वाली लाइन याद है अगर तुम्हें शक पड़े कि इससे शी इज गोइंग इनटू पल्मोनरी एडिमा और समथिंग oxygen saturation is the thing. Just put that little thing on her make sure she's got no nail polish. ठीक है. And just remember 93 से ऊपर होनी चाहिए ठीक है. And start her on oxygen. Pulmonary edema seriously no. Take it seriously. Oliguria क्या है नॉर्मल एक बंदे में कितना यूरिन आता है पर आवर नॉर्मली more than 30 ml. ठीक है ठीक है. अब मुझे बताओ कि बेसिकली लेबर में अक्सर ध्यान रखना if you are inducing if you induce that she goes into labor these women actually generally tend to go into labor और लेबर की रीजनेबली ठीक भी होती है लेकिन बहुत ज्यादा हीरो नहीं बनना ठीक है. और उसमें व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज just make sure that the output doesn't fall below 100 in 4 hours. अब वो 30 वाला तो नहीं कर सकता ना इंसान का बचा वो तो आईसीयू वाले करें अगर करना चाहते हैं. लेकिन ये 4 घंटे में 100 का एक फिगर अपने दिमाग में रखें. 4 घंटे में 100 से कम है शी इज एन ऑलिगोरी ठीक है. तो बेसिकली से that's what you need to remember from a practical point of view. ठीक है जी. और ये जीएफआर है ठीक है. ये तुम्हारे एमसीक्यू है अगर किसी को बनाना है. अच्छा जनरलाइज्ड एडिमा ये पहले होता था ना इसकी डेफिनेशन में प्री क्लैम्पशिया की डेफिनेशन में यू यूज्ड टू हैव हाइपरटेंशन यू यूज्ड टू हैव प्रोटीनूरिया यू यूज्ड टू हैव एडिमा. एडिमा स्टिल एडिमा है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. लेकिन व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज एंड अगेन वो एंटीनेटल केयर का आता है एंड आई थिंक द लेक्चर शुड बी फोकस्ड ऑन द फैक्ट दैट you are sitting in an OPD and how you going to improve yourself as a doctor. ठीक है. और उसमें ये जो सेकंड ये ना sudden weight gain it's of particular importance in modern day obstetrics at least in obstetrics where you're dealing with patients who are reasonably well off and they're not really starving but they will be soon if the policies continue. ठीक है. तो ये आपने इसको याद रखना है. 5 pounds per week से ज्यादा अगर आपको लगता है कि इसका वेट गेन हो रहा है that's a sudden weight gain that's an appreciable weight gain. और फिर आपने कुछ सोचना शुरू करना है कि now then you're dealing with something which is completely different and it can affect the pregnancy on multiple ways not just preeclampsia not just hypertension not just diabetes वगैरह ये और बहुत कुछ भी हो सकता है उसके साथ. हर चीज उसकी हो जाएगी. और ओबेसिटी पड़ी है किसी ने I think next वाला obesity होना चाहिए क्योंकि आज तक थोड़ा सा हम जरा easy ले रहे हैं. Ask Mars, he's dealing with it.
और फेशियल एडिमा भी है, अब्रप्शन हो जाती है, ठीक है। अब less than 1% without severe features or 3%. Severe features का chances of abruption is 3%. Always think of it. ठीक है। अच्छा, तुम्हारे पास एक पेशेंट आती है 34 वीक्स, ब्लड प्रेशर हाई है और वो कहती है मुझे स्पॉट लगा है। Give me a differential in your mind straight away and don't start from the worst case scenario first. Go सर ट्रॉमा हो सकता है, प्रीवियस एब्रप्शन, जी जी लेबर हाँ ये हेवी शॉक। ये ठीक है। अच्छा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हियर एक्चुअली। ठीक है। So how will you approach the situation considering you know these things? हिस्ट्री एंड हिस्ट्री एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन, हाँ जी, एग्जामिनेशन पे ठीक है, हिस्ट्री ले ली। एग्जामिनेशन पे क्या चीज करनी चाहिए हमें, जो मैं पूछना था? करेंगे to rule out the label और PS पेनफुल करेंगे। अपेंडिक्स सर। हाँ PA ठीक, and PS most important। जी बिल्कुल। पीवी करें या ना करें, पीए जरूर करें। नहीं नहीं बेटे, हाथ तो लगाना पेशेंट को खुदा के लिए पहले स्कैन। हाँ हाँ ठीक है। what was talked about, what does Dr. Rashid say about the scan? Scan की probe को क्या कहते हैं वो? He says that the probe of scanner is the gynecologist stethoscope. Use it freely in your spare time. If there is you're sitting in the labor ward, stop playing your phone. ठीक है। I don't know, पता नहीं तुम लोगों को कौन फोन इतने करता है, लेकिन चलो ठीक है। लेकिन अगर चलो तुम बैठे हुए हो और तुम्हारे पास टाइम है और पेशेंट्स के साथ तुम्हारी गपशप ठीक है, जो कि should be the first and the most important thing, that the patient should be looking forward to seeing you, the patient should be asking for you, and the patient should feel confidence in you. ठीक है। So you have a huge jump on us men, particularly in the society, in any society, because women would generally feel more comfortable provided they are pleasant and they're nice and they're able to listen to all the whatever she's saying. You think it's nonsense, it's okay, but just listen to it. आपका काम यह है कि आपने दिन में एटलीस्ट 3 या 4 मरीजों के जाके, चाहे आपको प्रोब पकड़नी आती है या नहीं आती, या आपके साथ कोई दोस्त है जिसको थोड़ा बहुत पता है, दोनों मिल मिला के कुछ सीखो। बीपीडी करो, फीमर लेंथ करो, उसकी मूवमेंट देखो। पहली चीज क्या देखनी चाहिए, हार्ट उसका जरूर देखना चाहिए, बेबी का कंफर्म करो, उसके साथ खेलना शुरू करो। गेट कंफर्टेबल विद द फैक्ट दैट you have a scanner there. Yes. I think they moved on. So जरूर करो। That's probably the most important thing if you want to have any sort of practice अपनी या कहीं बाहर कहीं किसी जगह भी जब भी कुछ करना है, स्कैनर अपने पास रखो और स्कैनर के साथ खेलो। रोज जाके 3-4 लोगों के स्कैन करो और बारी बारी करो। एक आए जो दूसरी आ गई है स्कैन करें और अच्छा रहता है, कोई बुरी बात नहीं है, एंड इट्स नॉट डेट्रीमेंटल टू द बेबी और ऐसी कोई खास बात नहीं है। ठीक है, दैट्स रिकमेंडेशन। अच्छा जी, अब पोटेंशियल सोनोग्राफिक फाइंडिंग्स क्या है? वही वाली बात जो व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट अर्लियर, सब ऑप्टिमल फीटल ग्रोथ होगी। एंड हाउ वुड यू फाइंड आउट कि ये हो रही है सब ऑप्टिमल फीटल ग्रोथ ऑन स्कैनर? सारा बता दूंगा। Fetal weight less than 10% of the gestational age। गुड, हाँ ये प्रॉपर वाली आई है बात। ठीक है, और सबसे आसान तरीका कि हम जैसे तो चले Like a warning। हाँ लाइक ग्रोथ चार्ट सर, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस ऑन सीरियल ग्रोथ स्केल। बिल्कुल ठीक है। और ये आपने जो पहली बात की थी, दैट्स एक्चुअली मोर रेलेवेंट इन द फैक्ट कि यू कैन नेवर, if there is a child of your sister or your brother who lives abroad and you haven't met them for the past 5 years and you haven't actually ever met, okay, and you see a boy or a girl who's like 4 years old and you met her for the first time, you can't just comment on the fact, yaar ye chota reh gaya. No, because you haven't met her. Okay, this is the first time you're actually seeing it. So how would you be able to appreciate the fact that chota reh gaya, lamba ho gaya?
सीरियल, ठीक है, सीरियल ग्रोथ स्कैन होते हैं, वो बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ठीक है। और ग्रोथ स्कैन में देखना क्या है, वो फिर आपने बीपीडी और एसी और एफएल, और ये अगर आप 3 चीजें करते हैं ना, तो कई मशीन के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है, इट ऑटोमेटिकली गिव्स यू द वेट, ठीक है, वजन वो खुद बता देता है, आपने कुछ नहीं करना होता, वो आपको बता देता है। फिर आपने ये भी देखना है कि 4 पॉकेट्स होती हैं उसकी, जहाँ लाइकर की होती हैं, वहां जाके आपने प्रोब रख के देखना है। और अगर आपके पास ज्यादा टाइम है और आप ज्यादा खेलना चाहते हैं, दिस इज हाउ आई लर्न, मुझे तो किसी ने नहीं सिखाया, ठीक है, तो आप जाके उसकी जो कॉर्ड नजर आता है ना, इन टर्म प्रेगनेंसी अच्छा खासा कॉर्ड घूम रहा होता है, उस कॉर्ड के ऊपर रख के डॉपलर ऑन करें, समझ आ रही, उस कॉर्ड के ऊपर अपनी प्रोब, अब वो इट्स रियल टाइम, दैट्स व्हाई इट माइट बी फ्रस्ट्रेटिंग एंड इट मूव्स आल्सो समटाइम्स, एंड देन उसके ऊपर डॉपलर ऑन करो, और डॉपलर ऑन करके उसको उसकी देखो उसका पैटर्न क्या बन रहा है, और उस पैटर्न को जाके स्टडी करो, तुम्हें समझ आएगा कि इट्स लाइक अ सॉर्ट ऑफ इस तरह यू नॉच सी आती है और वो चलता जाता है, एंड दैट्स अ गुड पैटर्न, ठीक है। ये हमारा देसी स्टाइल है ऑफ when you don't need the sonologist, या अपने आप को बड़ा ताज़न समझते हैं, और उसके आगे फिर वो देन वो आती है वो गंदी वाली चीजें। अगर उसका पैटर्न तुम्हें ठीक नहीं लग रहा, send her to the sonologist and get a proper one done. But this is how you learn. This is how learning on the job is done. Besides the वो जो आप करते हो ना मिस्त्री पनम, वो तो ठीक है, तो आप आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, you learn, ठीक है, that's okay, that you might have आगे पीछे हो जाता है, लेकिन what you need to do is at this stage in your life, and when you're studying for exams and when you're actually doing your residencies, that you must actually develop this habit of talking pleasantly to the patient, finding out what's going on with her, and taking great pride in the fact कि मैं इन्हें diagnose किया था, ठीक है। और फिर then depends on the fact that you can have a conversation with each other about क्या था ये, क्या नहीं था, क्या नहीं था। और तीसरी चीज होती है कि then you get so many people who are coming into this hospital who are like बड़े बड़े हैं, ठीक ठाक लोग हैं, then you ask them कि जी ये है, get their opinion, form your own opinion eventually, definitely form your own opinion, don't be कि जी उन्हें कह देता था नहीं, ठीक है, that's how you learn. That's a huge part of what you are going to become as a person, as a doctor. Because if you don't do this now, believe me, after passing SCPS, after doing whatever you are supposed to be doing, whatever exams, you will be this person. And then it's very difficult to change that thing. Reading her notes, reading like you come across a patient who basically has been coming here and you haven't seen the patient before. So before seeing that patient, and she's now 28 weeks, and you don't know who the concept, so basically you start off from the very basic, और वो जो बचपन में फाइनल ईयर फोर्थ ईयर में आपको बताया हुआ है कि जी हिस्ट्री कैसे लेनी है, वो कैसे करना है, you need to go through that, and you need to go through the past paper, and you need to find out, and believe you me, मैं तुम्हें अभी बेट लगाने को तैयार हूँ, 10 में से 5 कम से कम ऐसे मरीज होंगे जो आपको उसके कंसल्टेंट को जाकर तुम बताओगे कि भाईजान ये आपने मिस किया होगा, ठीक है। That's the easiest and the most important, आपके लिए तो बेनिफिशियल है ही है। दूसरा ये है कि people around you will start treating you differently because you will be considered safe, and this word safe is the most important word in modern day medicine, या मेरे ख्याल पुराने में भी यही होता होगा, लेकिन once people realize that you're safe in your exam, you're trying to prove to the examiner that you're safe. You're not आप ये जाके ये नहीं कह रहे होता कि भाईजान मैं एरिस्टोटल के एकदम रिश्तेदार हूँ, डायरेक्ट डिसेंडेंट, तो मुझे सारा पता है, ठीक है, उससे शायद ज्यादा ही आता हो आपसे, लेकिन आपने ये प्रूव करना है कि you're safe, and as long as you're safe, people will forgo things. वो जो था ब्रीच था, मैं उसे तो पहले कहता रहा हूँ आधा पौना घंटा जो मेरी से बहस हुई है लेकिन क्योंकि मैंने कहा था मैं स्कैन करा के कंफर्म कराऊंगा, आपको कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, एंड दैट्स द थिंग। अच्छा, अब क्या है ओलिगोहाइड्रोनियस, क्यों होते हैं वैसे ओलिगोहाइड्रोनियस, सोचा कभी?
What does oligohydramnios mean actually? क्या होता है? Decreased cycle होता है. Decreased cycle होता है क्यों होता है? It is normally Cord compression. cord compression leading to oligohydramnios. It can oligohydramnios can cause cord compression, I would say. Rather Decreased than urine production, sir. Decreased urine production by the fetus. जी जी वही ना वही तो पूछ वही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि उसका एक आपने सुना हुआ है ना नाम when you discussing वैसे this goes into the other realm to be fair with you जब आप वो बच्चे को प्रॉपर परफ्यूजन नहीं मिल रही to the placenta तो खाना पीना नहीं उसे नसीब हो रहा यूरिन भी नहीं ब्रेन स्पेयरिंग इफेक्ट एक चीज होती है have you heard about it so Yes, sir. what nature does is like why do you fall unconscious चलो सोचा कभी हाँ ब्रेन की परफ्यूजन कम होती है आप गिर जाते हो ठीक है क्यों गिरते हो गिरने में भी एक मसले है जो तुझे कहते हो मुझे चक्कर आ रहे हैं लोग कहते हैं उधर बह जा क्यों Brain does not have to work more. It's already having a less blood supply. जी Sir, वो redistribution of the blood to brain when the patient is lying down. how नीचे sir, का जैसे पूरा काम हो जाएगा ना it is the most obvious fact ठीक है अब आप लोग शायद समझ रहे हो पता नहीं मैं कौन सी कुछ साइंस पूछ रहा हूँ लेकिन ये ग्रेविटी है आप खड़े हुए हैं ठीक है सिंकपी जो होती है जो कि फौजियों में होती है इसलिए फौजी कभी नोट करना इस तरह करते हैं ठीक है ये सोलियस होता है आपका ये पेरिफेरल हार्ट है ये पंप करता है ऊपर खून अगेंस्ट द ग्रेविटी ठीक है तो आप ज्यादा देर खड़े रहेंगे तो अगर आपने इस तरह नहीं किया तो वो इट विल गो सो when the body tells you to switch off हो गया जी था आपकी ग्रेविटी वाला जो एलिमेंट है वो खत्म हो गया और फिर अगर आपने ज्यादा उसे करना है then you raise the legs and you make sure that and within a few seconds the patient actually comes back and that's the whole thing तो उसी तरह ये अल्लाह मियां ने एक निज़ाम बनाया हुआ है कि अगर आपके the baby inside the womb is not getting enough food then the brain will always get the preference ठीक है brain is like Pak Fauj so that's the thing so they'll always get that thing so whatever regardless of the fact that you have anything or not but they'll definitely get it ठीक है usually so hopefully शायद इस बात से याद रहे usually these findings occur in disease before term ठीक है anything yeah I was probably sleeping okay अच्छा अब ये वो डॉपलर है जिसका मैं तुम लोगों को बता रहा था कि यू शुड प्रैक्टिस ठीक है वो पता है ना कि जब फीटल हार्ट्स देखने होते हैं तो उसपे एक स्विच होता है there's this button on the machine which actually makes it sound like दुक 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 आवाज आती है उससे ठीक है उसी बटन को आपने दबाना है अल्ट्रासाउंड ये इसके ऊपर आपके कॉर्ड के ऊपर ठीक है and then you will see a pattern developing you will hear it also पूरा चलेगा ठीक है आसान तरीका है ऐसे सीखा था मैंने तो और आपको अंदाजा होना शुरू हो जाएगा कि ये पेशेंट ठीक है ये पेशेंट ठीक है और फिर इवेंचुअली तुम यू विल कम अक्रॉस के या जिसका मुश्किल डिफरेंट आ रहा है इस वाली का एंड देन यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट ठीक है ये जो ऊपर वाली 2-3 लाइनें हैं ये बकवास नहीं देयर इज नो पॉइंट रीडिंग काम का ये नीचे वाली 2 लाइनें हैं इंक्रीज रेजिस्टेंस जितना उसको मिलेगा ना उतना राइजिंग डॉपलर फ्लो और आपने जिस चीज के लिए डरना है एब्सोल्यूट और एंड फ्लो का डायस्टोलिक का जी क्या मतलब होता है पुअर क्यों होती है क्या पसंद के व्हाट डज दैट मीन इंपेंडिंग डूम के साइंस हैं ये ठीक है इंपेंडिंग डूम मींस के बेबी इज गोइंग टू कुछ मसला हो जाएगा और इसके 2 होते थे विद इन अ वीक एंड विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स रिवर्स का मतलब विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स है एब्सेंट का मतलब विद इन अ वीक है बेसिकली अगर यहाँ तक बात आ गई है ना वो फिर हाँ सीरियस काम हो चुका हो उसमें फिर देखना दुखना नहीं है आपने इन्फॉर्म करना है अच्छा मुझे बताओ कि अब आपके पास एक पेशेंट आती है एट 24 वीक्स हाउ विल यू स्क्रीन फॉर प्रीक्लेम्पशिया आपके पास शुरू से या
आती है, चलो जी एक पेशेंट आई है, पहला एंटीनेटल विजिट है, हाउ विल यू स्क्रीन फॉर प्रीक्लैम्पशिया? Blood Blood investigation से History fine after Doppler. sir, from history, taking history blood pressure, weight, blood and pressure, uterine artery proteinuria, Doppler. uterine artery Risk Doppler. factor की evaluation followed by the blood pressure and then आपकी blood investigation, lastly uterine artery. Uterine artery Doppler at 6 weeks? Plus 6 weeks से 20 to 20th week 24 onwards. weeks. 20 weeks. हाँ, नहीं मेरे ख्याल में तो बिल्कुल आपने ठीक कहा था, रिस्क इवैल्यूएशन, ठीक है, विच विल इन्वॉल्व कि जी कि आप कितने सारे वो जो सवाल है जो कि शायद ये जो रिस्क फैक्टर्स थे जो कि थे, यू गो ओवर देम, ठीक है, यू मेक श्योर ऑफ द फैक्ट दैट द अपना इट्स अ फर्स्ट प्रेगनेंसी अलग, if she's had a previous episode in the last pregnancy उसका अलग, ठीक है, एंड उसकी फैमिली में अगर किसी को कुछ Extreme हुआ of तो ages. उसका अलग, ठीक है, एंड विच बीमारियां एक्चुअली आर याद है कोई बीमारियां which can cause this Sir, diabetes, APLS, renal involvement and previous Chronic hypertension. hypertension, renal disease, ठीक है, Diabetes mellitus, APLS, autoimmune problems. SLE, बिल्कुल ठीक है, और ये आपने पूछ लिया, अभी मैं उस पर आ रहा हूँ, मैंने कि लिखा था कि नहीं लिखा था, ये ठीक है, ये डिफरेंशियल ही है, ये बेसिकली ये सारी खवातीन आ सकती हैं आपके पास, आपने याद है कि द कॉमन फैक्टर इज ब्लड प्रेशर, ठीक है, और जो मेन साइंस से जो अभी हम 4-5 जो हमने बोले हैं कि विजुअल, न्यूरोलॉजिकल, ठीक है, और आपने इसी तरह से कोशिश करनी है कि ऊपर से शुरू होना है, और आपने हेडेक, दिमागी खराबी, आंखें, ठीक है, और कोई चीज मुझे तो नहीं कह रहा, नीचे आओ, नीचे क्या है, Epigastric pain, एपिगैस्ट्रिक पे, ठीक है, और edema, rapid increase of the weight. हाँ हाँ बिल्कुल सही, ठीक है, इस तरह कुछ इसका कोई फॉर्मूला बना के ये आपने पूछना है, अब ये हैं ढेर सारे, ठीक है, और ये अब ऑब्वियसली हमें याद तो नहीं रह सकते ना, ठीक, लेकिन आपने मेजर जो बातें हैं वो पूछनी है। आप अगर एक सवाल पूछ लो कि जी के पहले तो नहीं थी, कोई और डिजीज तो नहीं है, ठीक है, मेडिकल डिसऑर्डर तो नहीं है, दवाइयाँ कौन सी खा रहे हो, तो आपको काफी कुछ समझ आ जाएगा, ये काफी चीजें वैसे ही हो जाएंगी, आपको नाम लेने की जरूरत तो नहीं है ना, अब ये फियोक्रोमोसाइटोमा को तो याद करते करते आधा घंटा लग जाता है, ठीक है, फियोक्रोमोसाइटोमा क्या होता है वैसे? एंजाइटी होती है सर उसमें, जी, एंजाइटी। एंजाइटी, हाँ हाँ, question repeat, Sir, sweating होती है, sudden increase, sudden change in the blood pressure. syncopial attack, हाँ वो भी हो सकता है, नहीं लेकिन ये कैसे मैनिफेस्ट क्या करता है आपके साथ यूजुअली आके, लोगों को क्या होता है? इट्स ब्लड प्रेशर, इट्स हाइपरटेंशन होती है, ज्यादा बड़ी टका के हाइपरटेंशन और रेजिस्टेंट किस्म की हाइपरटेंशन होती है, एंड ये रीनल्स का ट्यूमर है, ठीक है, रीनल्स आर द क्राउन जूल्स lying over the kidney, it's like उसके ऊपर ताज सा पड़ा हुआ है, I've yet to see them actually, कभी तो कभी देखूंगा, तो Excuse me sir, हिस्ट्री लेते हुए जब हम पूछते हैं पेशेंट से कि आपको ब्लड प्रेशर के अलावा कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, तो फिर हमें इतनी डिटेल्स फीचर्स पूछने की जरूरत तो नहीं होगी ना, अगर नहीं वो कह बिल्कुल दिया कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं, वो तो टाइम हाँ जाया हाँ, होता है फिर। उसका एक आसान तरीका होता है कि जी आप उससे कहें जी कि there are two or three lines of question which you need to ask such people and still people miss them, ऐसी कोई बात नहीं, उसमें है कि जी दवाई कौन सी खा रही हैं, कोई खाती तो नहीं थी पहले, कभी अस्पताल में दाखिल रही हैं, कभी कोई ऑपरेशन हुआ है, कभी कोई इतनी बीमारी हुई है कि आप अस्पताल चले गए हैं, इस तरह की बातें बंदा पूछ सकता है टू पीपल हु aren't really educated, but you'll still end up missing a few things. But in a hopefully a person who's educated and who looks after herself, then she should be able to answer. Obviously, she won't know anything about. आप उससे ये पूछ सकते हैं कि medical problems तो नहीं है, कोई आपकी दवाई शवाई ये कोई आपको कभी दी तो नहीं है, and that's basically it. So this is for you. This is not meant for the patient. You can just ask these things, and in a generalized questionnaire sort of a manner जो आपने रखा हो अपने पास, और आप उस पर टिक करते रहते हैं,
और आपने एक रिस्क असेसमेंट फॉर्म आपका जो बुकिंग विजिट पे आपका होना चाहिए, उसमें ये चीजें आनी चाहिए. इट्स हाई रिस्क प्रेगनेंसी, सो बेसिकली वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड. अब ये मैंने एक चार्ट सा सर एक्सक्यूज मी सर, एग्जाम सर्किट में ना बाज दफा जैसे ज्यादा कैंडिडेट्स होते हैं ना, तो पेशेंट तो फिर बाज दफा किसी कैंडिडेट को वो बात बताना ही भूल जाती है, ये भी बड़ा एक मसला है. हाँ हाँ बिल्कुल होता है जी, ये हर एक के साथ हो चुका हुआ है. But the thing is, you can recover, provided the fact that when you are talking to the examiner, you make it clear कि I have asked her this question. ठीक है? जी सर. 5 minutes मैंने अच्छा भागना अच्छा. That's the whole thing. You just make sure I don't know whether you guys still have long cases or not, but in the during the time of long cases, you had to make sure. When I was having my long case, they were discussing barize ki saadiyan and that sort of thing. But you just barize ki saadiyan nahi hoti thi. There was kuch aur hota. Okay, whatever. So, but you have to make sure that you mention it so that आप पकड़े ना जाएं बाद में, particularly ऐसी बातें. और खैर ये इनकी थोड़ी सी हैं, just have a look at them. If you have any questions, fine, but we'll be wrapping up soon. And the next topic, if I get the chance, will be on obesity. ठीक है? And probably इसके बाद जो हमें करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि मुझे तुम लोगों ने आके किसी ने सना being the thing की गुफ्तगू में काम करते, तुमने मुझे जाके अपना नीचे दिखाना है कि तुम्हारी बुकिंग विजिट पे तुम लोग करते क्या हो. लेबर रूम forget मुझे नहीं पता what consultants do or not, उनके अपना है, लेकिन हमने कोई रखा हुआ है कोई रिस्क फैक्टर्स का कि हाई रिस्क लो रिस्क, और हमने कोई अपने लेबर रूम में कोई इज देयर अ प्लेस वेयर देयर इज अ हाई रिस्क की हाई डिपेंडेंसी यूनिट हमने बनाया होगा. नहीं हर चीज नहीं होता है ना बेटे. अब उस दिन there was this patient who had an IUD. सुनो एक ethics होती है, गाना खाता है, it's a labor ward, things happen. That patient presented with this thing. ठीक है, IUD हुई थी जब she came to the labor. बेटे ऐसे पेशेंट्स को हमेशा आइसोलेशन में रखो. आप बात करके, it should be understood. She should not be kept in a cubicle right next to a live baby जहाँ पे heartbeat आ रही है. She should be kept isolation. That's the least you can do. ये छोटी छोटी चीजें मैं कोशिश करूंगा कि ये करो. It's very insensitive. That's the first thing. And usually आप उनको उनसे पूछते हैं कि साइरोटैक देनी है, इंड्यूस करके घर भेज दें, फिर आ जाओ. एक्सक्यूज मी सर, अगर पेशेंट के एब्सेंट डॉपलर आ जाता है, एब्सेंट डॉपलर, तो एग्जाम में हमने क्या बताना होता है कि हम इसे कब डिलीवर करेंगे, क्योंकि वो रिवर्स का तो पता है कि 24 आवर्स के अंदर अंदर करना है. एब्सेंट के बारे में थोड़ी सी कंफ्यूजन. एब्सेंट का ये है कि जी के 7 days में fetal demise is thing, but it's 7 days, it's an urgent case. आप you'll talk to the patient, you let her know. Obviously the delivering the baby depends on a lot of other things also, like number CTG one, की फाइंडिंग सर, CTG की फाइंडिंग. but the patient's wishes. Start from the patient. You're treating the patient, you're not treating फिर आप वो it's a real life scenario. You start with the patient's wishes. Does she understand what the problem is? Does she understand? And your main aim of preeclampsia or any other obstetric thing is that delivery of a baby which and in a manner के जब deliver करें, और उसके बाद the aim is कि the baby and the mother thrive. Emphasis on the word thrive. You need to अगर early है तो you'll need to call the neonatologist with you in your conversation with the patient. That's called multidisciplinary करो. Anesthesia वाले को बुलाओ, सारे मिल के बैठ के उससे बात करो कि जी आप 28 हफ्ते पे हैं, इस तरह है, estimate weight ये है, we need to get this baby out now. ठीक है? And then you make a plan. It's a first class जबरदस्त तरीके से you need to deliver that patient. 7 days is किताब में mentioned. That doesn't mean you need to hang around for a week or so. आपने अगर स्टीरॉइड्स नहीं दी, आप स्टीरॉइड्स हैं और डिलीवर कराओ. सर इसी तरह जो अर्ली ऑनसेट IUGRs होते हैं जिनको हमने विद इन 32 वीक्स डिलीवर करना होता है, और अगर वो 28 वीक्स पे आ गई या उसके साथ एब्सेंट फ्लो के साथ, तो उसमें एक लिमिट लिखी हुई है बिटवीन 30 to 32 वीक्स.
अब 30 to 32 वीक्स में किस तरह से सर वो कौन सा वो करेंगे, वो भी इसी तरह के डिस्कस करेंगे? आपने उस पेशेंट को जब आपने उसे प्री क्लैम्पशिया डायग्नोज किया तो वी स्पोक अबाउट दिस दैट द अर्लियर इट्स डायग्नोज द वर्स्ट द आउटकम इज। ठीक है सर, आ गए? हाँ सर आए? नहीं आए? नहीं अभी नहीं है। ठीक, अगर सर नहीं आए तो मुझे बता देना, सर आ गए तो मैं बता। ठीक है, तो द वर्स्ट आउटकम इज, सो अगेन you have to individualize this thing and you have to learn how to argue with your examiner and you need to understand what I'm trying to basically, मैं तुम्हें कोई rocket science नहीं बता रही, आपको मेरे से मेरे ख्याल से ज्यादा आता होगा। इसकी गेम ये होती है कि आपने ऑब्स्टेट्रिक्स में आपने जस्टिफाई करनी है अपनी पोजीशन और आपने सेफ रहना। अगर आपने अर्ली 32 किया, मैं कहता हूँ आप 28 पे डिलीवर कराएं उसे, अगर आपने कराना है उसे डिलीवर, आपके पास फैसिलिटी होनी चाहिए कि आपने जब बेबी बाहर निकालना है उस हॉस्टाइल एनवायरनमेंट से, so that baby actually thrives. Otherwise, listen, there's a lot of pointless things being done. You shouldn't be that way. You should be focused on the fact that the girl should be all right, the baby should be okay. It's her first, second, whatever, first pregnancy. It's precious for her. आपने उसके साथ कोई रिस्क नहीं लेना. And you need to, once she's on board, better you can do anything to anybody as long as you say. So involve a few people. There is no cut off. ये नहीं होता कि जी इतने पे ही होगा। हाँ ठीक है, इससे आपने ठीक बताया कि उसने आपको बता दिया है कि भी 32-33 वीक्स तक इसे डिलीवर करा लेना, आप उससे पहले भी करा सकते हैं क्योंकि थिंग्स चेंज वेरी वेरी रैपिडली। कोई चीज she might, ये you know, तो इंडिविजुअलाइज होगा ना सर, जी उस वक्त की पेशेंट की सिचुएशन के मुताबिक इंडिविजुअलाइज होगा एब्सोल्युटली ना। गाइडलाइन में तो हमें एब्सोल्युटली बता दिए कि ये करना है और इस तरह करना है और लेके चलना है। जी We have to apply according to the patient. हाँ एब्सोल्युटली you have to apply it according to the patient. सर आगे? ओके बॉस, थैंक यू। Okay, thank you. Thank you, sir. Assalamu alaikum, sir.